morning, everybody. And thank you for taking out in this session number 6, I think, for live sessions which we are doing in YMCA Mob Learning. And this time I'm, what you call it, extremely happy because the facilitator today is not from an outside, but he's part of our alumni. Indrajit Nagpal is 91 pass out, and incidentally, he was. We were together in YMCA, and I could see some of my batchmates today. Brijesh Tyagi is there, Pawan Bhargav is there. It's wonderful to see Sunil was there. I think he'll be logging in again, and all other seniors and other part of college. I think the way we are building this and the way we are learning from each other is fantastic. Now, Indrajit has a very interesting story, in college, he was extremely the other side, but you will see him today. Okay. Now I don't want to talk about that other side. Okay. And when we passed out from college, we did not meet for very long. And then we met, I think, almost after 20 years, 22 years, one fine day. And when I met Indrajit, he was working with the Honda cars. He was heading their quality department, TQM and other things. And we had a good chat. And in the evening, I asked Indrajit, let's celebrate. And his celebration changed actually. And I said, what, you don't drink anymore? He said, no, my celebration style has changed. I still celebrate. And just to share with you guys now, we have been working together on some projects for the last 4-5 years. And he's a fantastic professional as far as quality and processes are concerned. He has been impacting organizations on one side to improve their quality, improve their cost structures, their process in such a way, and he's able to create magic to many clients. Apart from that, the other part of his spiritual part and his attachment to Bhagavad Gita, its learning and other things, he keep on sharing with us, and we thought, why not he should share that with everybody, because learning from Gita and applying them on a management is a great idea. Just imagine, he has in fact moved to Vrindavan and he operates out of Vrindavan now. That's his dedication to this subject. So Indrajit, not taking more time, all stage is yours. Let's hear out. Good morning to all of you, and thank you Asim for such a generous introduction. मैं सोच रहा हूँ कि इतना traits मेरे में है कि नहीं है. So they are from heart and experience, okay? So let me share my screen first, then I will. So my screen is visible to all of you, sir? Yes. Okay. So a warm welcome to all of you. And today's session is very different, like Asim said. दो तरह से different है वो. एक तो ये है कि I'm not promoting any business right now. अभी तक जितने भी sessions हुए हैं तो उसमें end में कहीं ना कहीं होता था कोई business trades को लेके बात होती थी. My very humble submission and intention is that I will share my learnings from Bhagavad Gita, whatever I have read or I'm trying to practice. And if I'm able to inspire you to read Bhagavad Gita, that is the only motive, nothing else. And second thing, like he said, कि ये पहला session है जिसमें YMCA के ही pass out है. It's very pleasing to me. In fact, when we think of YMCA, so many things are connected. वो हम सबकी common है. पहला चीज हमारे mind में क्या आता है जब हम YMCA की बात करते हैं? Anyone? Please, sir. When we say or when you think of YMCA, what is the first thing that will come to your mind? सर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है याद करके. The Yes, way we absolutely. spent the 3-4 years. Absolutely, sir. ऐसे भी मेरे को तो कुछ चीजें तो मेरी बिल्कुल उसमें है. We go into our past and recall those moments. Yes. Few things are in my very quick memory. वो कैंटीन, पंडित जी, कलमाई का मास्कट तो मैंने कॉलेज में आके फर्स्ट टाइम सुना था this word. मास्कट. Okay, sir. So we'll start. And before starting, I will give a disclaimer. First of all, I'm not a big saint. I'm not a scholar. And I'm also not a professional speaker. I'm just trying to share my experience with you. Or today's topic is Management Sutra from Bhagavad Gita. So let's start. So we'll start with a basic question, like what do we want from our life? I think keep on changing as you progress in life, College days, the want was different. Career start kiya, want different tha.
आज की डेट में वांट डिफरेंट हो गया है. Yes, you are absolutely right. I think ultimately it could be Peace, contentment prosperity, and peace at the recognition. end of the day. Yes, if we summarize, in my understanding, ये सब चीजें हमको चाहिए और भी होंगी, but like these are the major things. We need wealth, we need positive engagement, happiness, peace, fame, good health. We need also happy relationship. है ना? अगर मान लो सारा कुछ हमारे पास है, wealth है, happiness है और बाई चांस घरवाली से लड़ाई हो गई, तो समझोगे फिर वो उस दिन का तो टाइम निकल जाता है ऐसे. So we want all this, and the underlining requirement is the money. There is no denying about that. The money is not everything, but money is very important thing. So that's why we work. Now, are we getting what we want? इतना सब हम करते हैं, 10-12 घंटे लगाते हैं अपने ऑफिस में, काम में. Either we are working or like we are managing our business. Are we getting what we want? Good question. Sometimes yes, sometimes not. Yes, this is the right thing. क्योंकि बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं. But overall, if you see, in my experience, we still have so many challenges in our life. So many things we are seeking for. बहुत सारा हमारे माइंड में dissatisfaction है और कभी-कभी frustration भी होता है. Apparently, it seems very good when we are meeting someone first time और बहुत happy mood में होता है, कैसा चल रहा है यार, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, first everything going on. But थोड़ा सा जब हम क्लोज आते हैं, 2-3 पैक कभी लग जाते हैं, तो देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग, यार पेमेंट नहीं आ रही क्लाइंट से, बिजनेस डाउन है, रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आ रही है. So basically, so many things are happening. And in my life, I have tried to understand why this is happening. मेरा सोचना ये है कि it summarizes to two things. First of all, what we do and how we do it. दो चीजें हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं. Basically, our management. How do we manage the things around us? अब क्योंकि हम लोग मेनली बात करते हैं अभी अपने वर्किंग एनवायरनमेंट की, इन आवर टोटल 24 आवर्स आई बिलीव 10 से 12 घंटे हम काम करते हैं, एंड 6 to 7 आवर्स और 8 आवर्स भी स्लीप. तो टोटल 24 आवर्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 10 घंटे चले गए काम में, 10 से 12 घंटे, 7 घंटे बचे हमारे नींद में और 7 घंटे बाकी जो बचे हैं वो हमारे और चीज़ों के लिए. नाउ देयर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स. 10 घंटे हैं हमारे वर्किंग में और 7 घंटे हमारे उसके जो अलावा है, नींद के अलावा. सो व्हाट वी डू इन दोज टू पोर्शंस, या तो हम उस 7 घंटे में जो हम जागे हुए हैं और ऑफिस में नहीं है, उसमें कुछ ऐसा करें जो हमारी इन 12 घंटे को इन्फ्लुएंस करे, या इन 12 घंटे में कुछ हम ऐसा करते हैं जिससे हमारे बाद के 7 घंटे इन्फ्लुएंस होते हैं. इन माई लाइफ आई विल टेक, क्योंकि आज का टॉपिक है, मैं अपनी लर्निंग शेयर करूंगा विच विल बी एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो समटाइम समवेयर. मेरा ये तजुर्बा रहा है, मैंने जो देखा है कि मैं अपने जो बचे हुए 7 घंटे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया अपने वर्किंग पे स्टार्टिंग में, बट कि जो 10 से 12 घंटे जो वर्किंग होते थे वो इन्फ्लुएंस करते थे मेरे बाकी 7 घंटे. तो दिस मींस मेजर पार्ट जो है हमारा, जो एज ए मैन और एज ए वर्किंग पर्सन इन फोकस ओरिएंटेशन रहता है, वो वर्किंग पे रहता है. दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सेंटर दिस डिस्कशन अराउंड द वर्किंग आवर्स ओनली और मैनेजमेंट स्टाइल. अब बात करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट. अच्छा, थोड़ा सा मैं इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, तो प्लीज बी अटेंटिव. और दूसरी चीज ये भी है कि आई वांट टू मेक इट लिटिल मोर इंटरेक्टिव इन सेंस कि आपका अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ कमेंट है, यू डोंट नीड टू वेट फॉर द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, आप उसी वक्त में ही ऐड कर सकते हैं. यू कैन आस्क सम क्वेश्चन आल्सो. You can ask or you can write in the chat box and you then can write we also. will see and answer. So what is our management? हमारी डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की? देवेंद्र जी, पवन आप बता दो. अच्छा, What is the question, Indrajit? क्वेश्चन इज व्हाट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी? Organizing the various activities as per the expectations. Yes, very good. Optimum utilization of the resources available, that can be your wealth, time, energy, and everything, you know. Great, sir. Anyone else would like to share something?
पवन सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? ओके, लेट्स मूव ऑन। ये भी हम देखते हैं कि बाकी जो मैनेजमेंट के गुरुज हैं वो सब क्या कहते हैं। 3-4 कोटेशंस मैंने यहाँ से निकाली हैं। सो वट एवर बोथ ऑफ यू हैव सेड, असीम हैज सेड, तो वो सब चीजें कॉमन ही है। बेसिकली फोकस इज ऑन। आइए सर, आइए, क्या हाल चाल? आइए आइए, आओ, भगवत गीता पे सेशन चल रहा है, सुनो। अच्छा, हाँ, भगवत गीता का वो क्या इफेक्ट है हम लोग। Sorry. So basically, all of these leaders, what they say, management is the art of getting things done. Some say that it in a most organized way. Some say optimal usage of the resources. Some say to do it very economically. But the basic line is to get the things done. अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, is this sufficient or correct or not? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इन माय अंडरस्टैंडिंग दिस अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, जो बेसिक हमारी डेफिनेशन है, दैट इज लिटिल प्रॉब्लमेटिक, आई विल से। उसमें कुछ इश्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट हैंडल्स द इश्यूज एट ए वेरी सुपरफिशियल लेवल, मटेरियल लेवल, और ज्यादातर जो बात होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रास्ट में बात होती है कि कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, कैसे कंपनी को प्रॉफिट मिलाएं। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स ओनली, टू हाउ टू प्रॉस्पर, हाउ टू ग्रो द बिजनेस, लाइक दिस थिंग। और बहुत सारी जो थ्योरीज हैं बेसिकली वो वेस्ट से आ रही है, तो हम लोगों को भी माइंड में ये आ गई है। चैलेंज क्या है? नो वन स्पीक्स अबाउट द इनर वैल्यूज ऑफ द लाइफ. No one speaks about the different weaknesses we have in our inner self. No one speaks about what kind of improvement, what kind of things we can do so that we can change ourselves. ये सब चीजें मिसिंग है। बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, जस्ट सुपरफिशियल अप्रोच है। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। हाउएवर, भगवत गीता का क्या स्थिति है? भगवत गीता इज ए डिफरेंट स्टोरी altogether. It handles the situation in a very holistic way. First of all, it has a inside-out approach. Inside-out approach means पहले हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अंदर से इम्प्रूव करना है अपने आप को। मैं अपनी इनर क्वालिटीज को इम्प्रूव करूंगा, देन आई विल डिस्प्ले देम इन माय एक्शंस, और उस एक्शन से बाकी लोगों को इंस्पायर करें। बेसिकली द ग्रास रूट लेवल ऑफ आवर थिंकिंग। व्हेन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स, आवर एक्शंस विल बी इम्प्रूव्ड. So this is the basic approach of Bhagavad Gita with reference to management. भगवत गीता कैसे हमको मैनेजमेंट सिखाती है, ऐसा हमारे माइंड में इंप्रेशन है। भगवत गीता इज अ वेरी रिलीजियस बुक. इट टीचेस अबाउट द गॉड, हु आर वी, सोल, हमारा कनेक्शन क्या है। बट आज हम बात करते हैं भगवत गीता को मैनेजमेंट के मैनुअल की तरह से. सो हाउ डज इट टीचेस अस? So these are the few things, 10 or 12 things I have picked, which we will be discussing today. Work culture, leading by example, leadership beyond position, equanimity, 3 modes of material nature, mind control, mindfulness, and working with a sense of detachment, workplace ethics, managing speech, dealing with negative elements, then finally to do our best. So I will try to focus our discussion on these 12 points. So let's take them one by one. Okay, let's first talk about the positive work culture. फिर से मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन बनाना चाहता हूँ. What do we mean by a positive work culture? Free to express own views. Absolutely, sir. Great. Absolutely fine. From fears. This is the crux of the things you have said. अब मैं रेफर करूंगा भगवद गीता का पर्टिकुलर श्लोक, और उसके से जो लर्निंग आती है वो हम डिस्कस करेंगे. इन चैप्टर 16 टेक्स्ट 1 to 3, कृष्णा सेज, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम. Which means for a positive work culture, for the Devic work culture, there are 2 kinds of
पर्सन वी कैन से, एक आसुरी स्वभाव के होते हैं, दूसरे दैविक होते हैं। तो जो दैविक स्वभाव के लोग हैं उनको दैविक वर्क कल्चर, पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करना है। So there are so many things that we can discuss, but I have taken 3 or 4 things today to say. First is fearlessness, like he said. In any organization, I think each person, he should be given a freedom to express his thoughts, ideas, even difference of opinions with complete freedom. That's how, this is the only way he can contribute towards the growth of the company. अगर किसी को बोलने का ही मौका नहीं दिया जा रहा है, उसको फियर है मैं अपनी बात कैसे रखूं, मेरी बात को लोग नेग्लेक्ट करेंगे या उसको मजाक बनाएंगे, then he is not able to contribute. So first thing is that we have to make the environment without fear. Second is truthfulness. लोग सच बोलें, ये बोलना बड़ा मुश्किल लगता है, बात कहना कि काम भी करना है, बिजनेस में भी रहना है और ट्रूथफुल भी कैसे रहना है, but still we can do. I have seen several situations, you might have also seen, we have seen the data being misrepresented, misled, distorted, modified to make the things, made the presentation very pleasant to the management. This kind of work culture is not suitable. Basically होता क्या है कि आप अंधेरे में रहते हैं. So this is the second thing that we have to maintain the truthfulness. Third is that, like we have, all of us, we have different qualities. कुछ फाइंड हमारे में फॉल्ट्स हैं, कुछ हमारी पॉजिटिव थिंग्स हैं. एवरीवन हैज फॉल्ट, सो वी डोंट हैव टू मेक ए कल्चर ऑफ टू फाइंडिंग द फॉल्ट्स विद आवर टीम मेंबर्स और द सबऑर्डिनेट्स और आवर सीनियर्स. वी हैव टू encourage the culture of tolerance and acceptance. We have to make sure कि जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, टीममेट्स हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं उन पे हम काम करें, उनको इम्प्रूव करें, instead of finding faults with them. So these are the 2-3 things that I have taken from this text which are applicable to our context. अब next बात आती है कि ये तो चीजें हमको encourage करनी है. In next I think Indrajit, we can add learning also to that, to Yes. the work culture, because learning is a constant aspect that should be there in our work culture. Absolutely, sir. Great. And one more thing I learned from one of the great guys, that he said we always look at the weaknesses and come over our weaknesses. What I learned from this very senior executive in Honeywell, he said, I only work on my strengths, and because that's my stronger part, and I believe that makes me more successful instead of looking at my weaknesses. Absolutely. So, great, sir. Great. Brijesh, because in fact, we also as an organization not only believe in this and promote this, that we should work on strengths. We follow Gallup's Clifton strengths, which says that you can only do better if you follow your strengths. Weakness you need to just manage. Good point. Yeah. In fact, this is my personal experience because Aseem and me have been working for quite some time together. और अच्छा Aseem ने बहुत कल्चर वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है. Like all the traits that we have discussed, काफी सारी अच्छी तरह से well implemented हैं. The people are free to speak. Like all the members, it's not only like कि managers की बात कर रहे हैं. Starting from the peon, staff, manager, or even the new person who has recently joined, all of them should be given a free chance to speak. In the next sloka, Krishna said, like, what should we avoid? Yeah, one pride, minute. arrogance. On this subject, this is Rajesh Katyal. On this subject, the word weakness, when I used to work with career and all, the word weakness was substituted with area of improvement. तो जब हमारा वो बनाते थे, हम लोग रिव्यू करते थे, there was वो कहते they removed the word weakness and they used the word area of improvement. So just wanted Yes, to. definitely. Thank you so much, sir. Basically, Rajesh sir is saying that instead of saying weakness, we have to use the word areas of improvement. This is a very better positive word. Yeah, and in the area next of improvement. Yes. In the next sloka, Krishna speaks about what to discourage. Indrajit, No sir, one- one question I was having. So Yes, sir. Please. there are many unknown territories now where business environment or in the work culture. So how to identify, okay, it's a weakness for me or strength for me? Because you don't know sometime, right? There are still unknown territories are there. You know from your past, okay, this is my strength. But there is always a chance of, as Katyal sir was saying, improvement. Because of weakness, should I step back it or should I go ahead? उस केस में Okay. सर मैं अपना Indrajit. एक्सपीरियंस बताता हूँ. Okay,
Sure. I use a word calculated risk. मैं अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ, जितना भी बेस्ट एजम्पशन इवैल्यूएशन कर सकते हैं उस सिचुएशन में, सम काइंड ऑफ एंटिसिपेशन देन सम काइंड ऑफ रिस्क, ऐसा हमको ट्रायल करना पड़ेगा उस केस में. Indrajit, if you allow me to add, Devinder, Yes, yes, sir. see what Yeah, happens. please go ahead, sir. It is very important to know our weakness and strengths both. Now, there are two ways it can be used. Number one is that you can take a feedback from your senior, your peer, and your junior all. Maybe that is called a 360-degree feedback, and there is a simple questionnaire which will tell you about that, how people perceive you about those. Secondly, evaluate that with what you know about yourself. Third, there is a very good assessment called Gallup's Clifton Strengths Assessment. If you go to Gallup Strengths, you can go and you can, do an assessment and you get a report about your top strengths, supporting strengths, and lesser strengths. Gallup believe in that there are all strengths in us. There are 34 of them. These are dominant strengths, supporting strengths, and lesser strengths. And then there is a science behind that. So these are two ways we have been using in management in various organizations, and it has been very helpful. Good. Asim has put in a very technical language. Good. Thank you, Asim. Super, Anyway, sir. let's move Yeah. forward. Yeah, And, thanks, sir. the point is that in the next law, Krishna said that we have to avoid these kind of traits in our work culture. No one likes to work with a company or with a team member where the leader is very arrogant, he speaks harshly, or he keeps on boasting about himself. So we have to make it sure that positive work culture has to be maintained in this way. और आज की डेट में हम देखते हैं कि like what kind of when we say ASRI work culture, in present context, this is the meaning of the ASRI work culture: dirty politics, groupism, jealousy, and we know all these things. So we have to discourage these things and we have to encourage the positive work culture. Next, हमने ये तो एग्री कर लिया कि हमको पॉजिटिव वर्क कल्चर होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. Now what to do? We'll do it. So here Krishna said, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत् देवतरो जना स यत परमाणु कुरुते लोकस्तथा अनुवर्तते. This means whatever action a great man performs, common men follow. This means the responsibility of creating this positive work culture lies with the top leaders. If I want my subordinates to be punctual, I have to be punctual. If I want my teammates to be truthful, I have to speak truth. If I want my employees to honor their commitment, I have to honor my commitment. So this is not possible that we behave as a leader in a different way and we expect the team members to behave in a different other way. I have worked in a Japanese company. मैं आपको real experience बता रहा हूँ, where all presidents, chairmen, directors, they used to do small things by their own, like doing a photocopy, getting tea from the vending machine, or getting water from the cooler. This kind of displayed behavior by the top leader is very much inspiring. And there's one more thing here, what Krishna says here: whatever action a great man performs, he's not saying whatever action a leader is saying. People follow what we do, not what we say. So we have to make it sure that whatever we are saying, what we are preaching, we have to follow. So anyone like to make comment on this? Okay, let's move. And one of the good example I have taken from Mr. Sridharan, अपना जो metro man है, he is using this Bhagavad Gita in his day-to-day life. And when he was asked like how he is able to motivate so many people in such a big company, then he said, I set the example for them. So whatever we are doing, our team will follow. So this is what Bhagavad Gita says about the leadership. उनको मैन पावर नहीं मिलती ना काम करने के लिए, इसलिए आदत नहीं पड़ती उनकी. हमारे यहाँ पे हेल्प मिल जाती है, इसलिए on a lighter note, the labor is very expensive, so they have to work on their own. हमारे यहाँ पे luxury है, इसलिए people get, हम लोग थोड़ा बिगड़ जाते हैं. Sorry for that, it's a little lighter comment. Yeah. No, but I understand, Rajesh, but then the point is this only, that अपना काम जितना हम खुद करेंगे, that's inspiring and we'll be. Yeah, I know. That's why it's more on a lighter note.
उनको बंदे ही नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, तो खुद ही करना पड़ता है उनको। No, sir, I'm talking about Indian environment. Japanese company in India, Honda Cars, India. ओके ओके। So Inderjeet, मुझे इस पे एक वो statement याद आ गया. I use it very often when I'm talking to my team. I said that the culture of organization is manager's shadow. Absolutely. So yeah, so this is sum ups that lead by example. Yes, great. Thank you, Bom. Good. Okay, now coming to the next sutra, leadership beyond position. We know Krishna accepted the role of chariot driver for Arjuna. जब वार हो रहा था कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच में, तो कृष्णा ने अर्जुन का रथ का जो ड्राइवर होता है वो बनना एक्सेप्ट किया था. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि कैसा वहां पे माहौल होगा. आप इमेजिन करो, वॉर हो रहा है, जब दोनों आर्मी आमने सामने हैं, पैदल हैं, एनिमल्स हैं, हॉर्सेज हैं, एलिफेंट्स हैं, शोर मचा हुआ है, और जो पोजीशन होती है ना इसकी ड्राइवर की, रथ के ड्राइवर की थोड़ी नीचे होती है ग्राउंड में, जैसा अभी ये फोटो में नजर आ रहे हैं ना, इतना सुंदर से मुकुट लगा हुआ है, हार पहना हुआ है, शायद एक्चुअल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता होगा. वो जो चैरियट ड्राइवर है काफी नीचे बैठा होता है, और नीचे से डस्ट आ रही होती है, हॉर्सेज की बैक से स्मेल आ रही होती है, और नीचे से ब्लड आ रहा है, और मतलब फ्लैश है, बहुत सारी, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग इशू होता है. And even in this situation, you know how the chariot Arjuna used to give indication to Arjuna, Krishna, how to move left or right. इतने आवाज में सुनाई, तो इतनी आवाज, इतने शोर में, तो he used to use his knee या फुट से इंडिकेशन होता था भगवान के शोल्डर पे कि आपको लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है. So this kind of humble situation he has taken. So what does this teach? This teach that we have to take the role of the servant leader. A leader has to think beyond his position. अगर कृष्णा ये सोचते हैं मैं तो भगवान हूँ, मैं तो क्यों अर्जुन का रथ स्वीकार कर रहा हूँ, और क्यों मैं सब काम करूँ, मैं तो अपना बैठ के शाम को स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे वॉर विन करना है. So this learning we can take from this Bhagavad Gita, that we have to take the humble situation sometime. Next is that leadership is a responsibility. ये कोई अथॉरिटी दिखाने का मौका नहीं है, कोई पावर दिखाने का मौका नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सर्विस है. And the main responsibility for the leadership is to create leaders, not followers. So this is a very contemporary like discussion in our management thinking. Leader is a good leader, then lead the leaders. All of us we know the difference between this leader and boss. Leader is like a sugar cane. He's juicy inside. गद्दा नहीं, उसको उधर से खो निकालिए उसको. May request to mute. और जो बॉस होता है वो इज लाइक ए बैम्बू. मींस जो लीडर है, he has very good traits to inspire to the team members. He understands the situation of the leaders. He listens to their problems. He works on their improvement areas. Like he said, not on the weak areas, he works on their improvement areas. He supports them, he motivates them, and he tries to make leaders out of them. This is the role of the leader. However, boss का situation क्या है? He is only demanding for the results. All of us we know this difference. The point here is that we have to take the humble situation, and we have to come out of the so-called mindset of the boss. अगर leader बनना है, inspire करना है, तो we can be at any position, but we have to create that kind of value to the system. Okay, next point is equanimity. तो समता यानी कि समभाव, कि कैसी भी स्थिति रहे हमको समभाव बना के रखना है. In chapter 13, text 24, Krishna said, "Sam dam sukh hai, sam dukh sukh hai, swasth hai, sam losta kanchan hai." Like we have to maintain the equal situation in case of a desirable situation or undesirable situation, honor or not honor. In such a big company, there are so many teams. ऐसा नहीं है कि हर बार हर टीम जीतती रहेगी. So we should not think that my only objective is to that my team should win or my team should succeed and they should be able to get the results. Our focus should be that we have to maintain a focus on the activity every time, even if we are losing.
एक टाइम में एक टीम जीतेगी, दूसरी टाइम में दूसरी टीम जीतेगी, तीसरी टाइम में तीसरी टीम जीतेगी, बट ओवरऑल इफ वी आर working together with full enthusiasm, the whole company will win. So this is called that we have to maintain a equanimity between success and failure. And we don't need to fear from the failure. Failure can happen, but after the failure, we have to, in fact, come with more preparedness, more enthusiasm, more positive attitude, so that we can do this job more effectively. Like we know, failure makes all the difference. Like approach to failure makes all the difference. We have so many of these quotations I have taken here too. Thomas Edison said, "I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work." Michael Jordan said, "Why I am winning? Because I have failed over and over and again in my life." So if we are losing or winning, we are learning something, and we have to try to maintain a balance. We don't lose our balance of mind or peacefulness of the mind. Okay, coming to next point, 3 modes of Indrajit sir, Indrajit Yes, sir, please. one question I was having. Yes, sir. Can you tell how to maintain this equanimity part in particularly daily goal is a process, right? Absolutely. And maintaining a equanimity is not like a walking on the red carpet, right? It's not a Absolutely. cakewalk. It's not so easy. It's not. I fully agree. It's not so Right. easy. So then what kind of a thought process we have? Okay, I should maintain my equanimity whole day. उसका सर जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, I will take example. When you see a problem or a duality, हमको कहीं failure हुआ है, success हुआ है, when we see this problem from the at that level, I will take example of the एक बिल्डिंग है. पहले आप जब नीचे खड़े हुए हैं और बिल्डिंग को नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो बिल्डिंग बहुत बड़ी नजर आएगी, तो वो जो इशू है हमको बहुत बड़ा नजर आएगा. बट व्हेन वी गो टू द अनदर बिल्डिंग, बिल्कुल सेम लेवल पे चले जाते हैं, तो उस बिल्डिंग को देखेंगे तो वो बिल्डिंग हमको एक उतने ही साइज में नजर आएगी जितनी अभी एक्चुअल में है. बट व्हेन वी गो टू द एरोप्लेन और वहां से हम देखते हैं उस बिल्डिंग को, तो वो सारी बिल्डिंगें माचिस के डब्बे की तरह नजर आती हैं. सो दिस मींस हम कहां से उस प्रॉब्लम को पकड़ रहे हैं, कैसे उस स्थिति को देख रहे हैं, इससे इट मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस. सो इफ वी टेक द थिंग्स फ्रॉम द बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू, most of the times we are able to come out of the session slowly. प्रैक्टिस करने से होगा. पहले बहुत छोटी छोटी चीजों को, इशू को हैंडल करना आएगा, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े. This is the way I have tried to implement. Okay. I hope I was able to make some sense. I Yes, think very good example, I would say. the Sambhav is like, we should treat people with equal approach. If we Yes. have different departments, maybe sales is more prominent and production is less prominent. So we need to have Sambhav towards all the areas of my business. I think that's kind of message we have. No, actually, I was more want to know from the individual perspective, because start of it was from the inner self, from self itself. Because many situations, it's not like company, in home also, in social life also, in relation also, in business also, organization also. So maintaining the equanimity is a challenge. That was my perspective. Yeah. All of us we agree, sir, but we have to practice. We have to study Bhagavad Gita. We have to see the life from the bird eye point of view. I think detachment also plays a role here in Vijit, right? Yes, definitely. We'll discuss detachment also in the coming slides. Okay, yes, please carry on, sir. So next is 3 modes of nature. ये शायद हम सब ने सुना होगा, तमोगुना, रजोगुना, सतोगुना. Let's try to understand what exactly they are. Satoguna means that a person is in full knowledge. He's having a resolute mind, determined. He's happy and he's contented. These are the few things about a person who is in Satoguna. Rajoguna mein we have unlimited desires. We are so much attached to the results of the actions. And when we get those results, we are very happy. But in case we are not able to get, then we are lamenting. So these are the traits of the person in a mode of passion. In Tamoguna, all of us we know the person is lazy. He enjoys in
क्या कहते हैं, दूसरों में फाइंड फॉल्ट करना, लेजीनेस, हर वक्त परेशान रहना, और हम जो बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में परेशान आत्मा, तो परेशान आत्मा का मतलब है तमोगुण है। तो लेट्स टेक ए स्मॉल पॉज हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग किस मोड में हैं। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। So sometime we are in Satoguna, sometime we are in Rajoguna, sometime we are in Tamoguna. Let's see how it relates to the situation in our context. एक जो मैनेजर है in the mode of ignorance, how does it work? How does he work? जो मैनेजर है ना मोड ऑफ ignorance में बड़ा obstinate होता है, जिद्दी है, बस एक बार जो पकड़ लिया काम उसको करना है। He enjoys in insulting others, दूसरों में कमियां निकालते रहना, परेशान रहना और एक नेगेटिव माहौल बना के रखना। ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, ये आदमी हैं जो मैनेजर मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, तमोगुण में है। द पर्सन हु इज इन द मोड ऑफ पैशन, उसके क्या ट्रेड्स हैं? ही इज वर्किंग विद वेरी एंथुसियाज्म, बट एट द सेम टाइम ही इज वेरी envious. He doesn't like anyone to succeed more than him or to achieve more than him. वो कंपैरिजन बहुत जल्दी करता है। एंड ही इज मूव्ड बाय जॉय एंड सॉरो, बड़ी जल्दी परेशान होना, बड़ी जल्दी खुश होना, इक्वानिमिटी मेंटेन नहीं कर सकते लोग। तो इस तरह के लोगों का ये ट्रेड्स होते हैं। अ पर्सन हु इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, जो मैनेजर गुडनेस में होगा, सतोगुण में होगा, वो क्या होगा? उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो अनफ्लिंचिंग रहेगी। ही इज ऑलवेज एंथुसियाज्म, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, एंड he will be equally placed in case of failure, in case of success. This means अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में फेलियर भी हो गया तो उसकी कोई ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में आ गया, परेशान हो गया, अगले दिन कोई नया प्रोजेक्ट है, नई मीटिंग है, तो भाई साहब वो उसी में फंसे जाएंगे, ऐसा नहीं। So these are the traits we are having in different modes and it keeps on changing. अब हम किसी वक्त में किसी मोड में होते हैं, किसी वक्त में किसी मोड में होते हैं। In my experience I have seen कि we should have a गुड बैलेंस ऑफ these three गुणास। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सतोगुण में रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सतोगुण में रहना चाहिए। वी हैव टू मेंटेन ए गुड बैलेंस बिटवीन सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो हायरार्की ऐसी है, मैक्सिमम थिंग और मैक्सिमम पार्ट और मैक्सिमम टाइप ऑफ अवर पर्सनालिटी शुड बी इन सतोगुण। उसके बाद नीचे वाला जो सेकंड ऑर्डर पे कम है वो रजोगुण, और सबसे कम होना चाहिए तमोगुण। एंड वी हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस। So, anyone to say something about this thing? So you mean tamoguna is also a must? Yes sir, tamoguna is must, because tamoguna में नहीं होंगे तो आपको एंगर नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको और भी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होंगी। मान लो अगर किसी स्थिति में आपको गुस्सा करना है किसी एम्प्लॉय पे, तो गुस्सा तो करो, तमोगुण में आपको आना पड़ेगा। गुस्सा करने की दो चीजें हैं, ऐसा एक तो गुस्सा करना, दूसरा गुस्सा होना। But if the situation demands that we have to be in that mode, so we have to play that role. So tamoguna is also required. So we have to make a good balance. I think you can see in terms of your team or the person, and then if it requires a tamoguna and you feel there is a laxity or there's a person who is like this. Yes sir, yes, you are right. At times situation demands that way. Exactly. Aggression, some kind of anger also, because maybe that's the solution, although that's not always inevitable, but some situations really demand that. Absolutely. And being angry is, see, all these are feelings. Being happy is a feeling, being jealous is a feeling, being sad is a feeling, being angry is a feeling. So all feelings are okay as a human being, I guess. What do you say, Indrajit? Absolutely, you're fine. Because these are feelings, and as a human being, we'll keep on getting these feelings in different circumstances. It's okay to feel in a particular way. The only thing important is, are you able to manage that, or does it overpower you? That's more important. And most of the time we should try to elevate to the mode of satoguna. अभी हमारा जो भी लेवल है उसको हम आइडेंटिफाई कर लें, and we should try to come more and more in satoguna. This will be more effective in our performance, or it will give us help to maintain our happiness and peace. Now question is that if we want to move to satoguna, what we should do?
So these are the few things that we can do. These are the straight away action points if we want to improve. First thing is that cleanliness. It's not only about the physical part, it's only about the mental part also. Physical part की भी बात करें तो लाइक इन इंडिया में तो हमारी सबकी आदत है कि सुबह उठना, क्लीन करना, अपने आप को ध्यान नहाना धोना. किसी बाकी कंट्रीज में ऐसा भी देखा गया है, लोग 2-2 3 दिन तक नहीं नहाते हैं. So we have to maintain cleanliness. Then eating sattvic food. This is very much I would say very critical. I have seen in my life. If we are eating tamasic food, it will lead to lots of anger, frustration, and uneasiness in our life. Third, we have to maintain the simplicity in our thoughts. जो हम सोच रहे हैं वो हम करें, वही हम बोलें. अगर इसको हम मेंटेन कर पाएंगे तो we will be at ease. बाकी सब लोगों को तो जो बेनिफिट होगा ही होगा, हमको इसमें काफी पीसफुलनेस आएगी. ये सब चीजें मैं कह रहा हूँ बहुत इतनी इजी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि हो नहीं सकती. We can try a bit, थोड़ा करके कर सकते हैं. Okay, coming to next point, mind control. This is my favorite topic. To understand this thing, let's try to imagine a situation जो हमारे वर्क कल्चर में या कभी-कभी मतलब अपने वर्किंग लाइफ में कॉमन है ये. आप एक सिचुएशन को इमेजिन करेंगे, there is a very chaotic situation. The results are very difficult to achieve. There is lots of pressure. There is lots of difference of opinion among the team members. सब लोग एंग्री हैं, बड़ी प्रॉब्लम वाली स्थिति है. उस वक्त में कैसे हम लोग बिहेव करते हैं? Let's take the example of person A. जो मैनेजर A है, how does it work? How does he work? वो क्या करेगा? He's carried away by the situation. He's not able to apply his mind due to his agitation. He will shouting, he will finding faults with the team members. ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? And in a whole this situation, he will not be able to solve the situation. He will not be able to come out of that problem. This is the type A person, I would say. Now coming to type B. In the same situation, environment is same. Chaos है, pressure है, targets meet नहीं हो रहे, लोग angry हैं. What he will do? He will listen to the team member attentively. He will try to understand the situation. He will focus on the solution. Positively अपना state of mind को रखे रखेगा. And in this whole exercise, he will be able to come out of that situation very successfully. ऐसा होता है अपनी लाइफ में या नहीं होता? Every day होता है. और we have seen. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा होता है तो सेम सिचुएशन में एक आदमी अलग बिहेव करता है और दूसरा आदमी डिफरेंट तरह से बिहेव करता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई दे आर बिहेविंग डिफरेंटली? एनीवन कैन हेल्प मी? अभिषेक? I guess a lot of things, Inderjeet, your maturity level, your background, your the way you look at the things and what is your situation right now. Yes. I think it depends on a lot of things. And also, is that situation in control or not in control? These all things will make us behave differently in different situations and different people in differently. Absolutely, you are fine, Asim. Maybe it is the tranquility of the mind also at that particular absolutely, space. Absolutely. यही सर भगवत गीता में जो भगवान बता रहे हैं 6.5 में वही बता रहे हैं कि it is all about the mind control. अब माइंड कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं? और माइंड कंट्रोल करना तो आज की डेट में ना एक बहुत बड़ी टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया सब मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए. Even people are claiming to control the mind in 10 minutes. So these are the different theories happening, but in my experience, none of them is very effective or permanent. कुछ टाइम के लिए कुछ इफेक्ट आएगा, but permanent नहीं आता. So how we will get the permanent solution? Let's try to understand what Krishna says. कृष्णा ने हमको बनाया है, उसने हमारी माइंड को बनाया है. Let's try to understand जिसने हमको बनाया है, जिसने कोई चीज को प्रोड्यूस किया है, डिजाइन किया है, he knows better than all of us. Let's try to understand what does he say. He is saying that mind can be a friend or it can be an enemy. मैं तो उसको एक एग्जांपल लेता हूँ नाइफ का. It is like a knife. Knife can be used for a good purpose with suitable handling, but it can
create some negative impact also. अगर बच्चे के हाथ में दे देंगे तो उससे एक्सीडेंट भी हो जाएगा. तो how to control the mind? इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक एनालॉजी की हेल्प लेता हूँ. We can see this picture on the screen. I will take the pointer. There are 5 things in this 5 elements are there. पहला एलिमेंट तो है हमारी जो बॉडी है, दूसरा एलिमेंट है हमारी सोल, थर्ड है इंटेलिजेंस, फोर्थ है माइंड और फिफ्थ है सेंसेस. ये 5 चीजें मिलके हमारी पूरी पर्सनालिटी को, इनर पर्सनालिटी को ड्राइव करती हैं. और इनकी हायरार्की ऐसे है, जो सोल है वो तो इस रथ के साथ कंपेयर करें तो सोल तो जो रथ का ड्राइवर है, जो ओनर है, गाड़ी का ड्राइवर है, जो डिक्टेट करता है, जो बताता है, लीड करता है कि कहाँ मुझे जाना है. जो चैरियटियर है, ड्राइवर है, वो है इंटेलिजेंस. और जो माइंड है वो घोड़े की लगामें है, और जो हमारी सेंसेस हैं वो है ये घोड़े. अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड जो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये जो ओनर है रथ का, ये ड्राइव करे, ये बोले कि सर मुझे जाना है कनॉट प्लेस, मुझे जाना है जनपद, मुझे जाना है सरोजिनी नगर. तो ये जो इंटेलिजेंस है ये पर गाइड करेगा, लगाम को खींचेगा, फिर घोड़े उसके हिसाब से चलेंगे. दिस इज द आइडियल वे. बट अभी हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, इससे जस्ट अपोजिट होता है. जहाँ पे सेंसेस हमारी भागती हैं, जहाँ पे हमारा माइंड भागता है, हमारी इंटेलिजेंस को भी हम वहाँ पे लगा देते हैं उसको अचीव करने के लिए, और जो सोल है वो बैठी है पीछे कोने में, उसको कोई पूछता नहीं. इट इज द करंट सिचुएशन. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे. बट ये सेंसेस जो है, ये जो घोड़े हैं, ये दीज आर रियली सेंसेस, दीज आर द आउटकम, राइट? नहीं विजेश, ये हमारी सेंसेस हैं जो एक रथ से कंपेयर किया गया ना. जैसे हमारी सेंसेस है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ सेंसेस का मतलब क्या है. मान लो अभी मैं गया मार्केट में, मैंने वहां देखा यार खूब बढ़िया बढ़िया ताजी ताजी जलेबी बन रही है, बड़ी हाइजीनिक है और एकदम से फर्स्ट क्लास है. और मेरी सबसे पहले नजर वहां जाएगी, फिर मेरे को उनकी स्मेल आएगी, उसके बारे में मैं सुनूंगा, तो मेरी सेंसेस सबसे पहले वहां जाती है. फिर मेरा मन करेगा यार मैं जलेबियां खा लूं. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंटेलिजेंस का. मेरी इंटेलिजेंस को पता है यार भैया तू प्रीबायोटिक है, HbA1c रिसेंटली कराया था, वो 5.8 है, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. अगर अब मेरी इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है तो वो माइंड को कंट्रोल करेगी, तो मैं जलेबी खाए बिना वहां से आ जाऊंगा. और अगर मेरा माइंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बोलेगा बेटे मजे ले ले, कुछ कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ये तो रोज की कहानी है, आज थोड़ी सी टेबलेट ज्यादा खा लेंगे. ओके. तो दिस इज द सिचुएशन विद अस. नाउ व्हाट टू डू. उसमें एक भगवान ये बताते हैं कि वी हैव टू टेक 2 थिंग्स, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. डिटैचमेंट का मतलब यह है कि हमको अपने माइंड को वहां से हटाना है. बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बेटे उधर मत जा, उधर नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो हमारा माइंड धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा. दिस इज द रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई हैव. नाइदर इसके वाइस वर्सा नहीं है. दूसरा क्या हमारे माइंड में कभी होता है कि यार मन करता तो खा लो, हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे को शांति मिल जाएगी. ऐसा नहीं है. टेम्परेली वी विल फील सेटिस्फाइड, वी विल फील हैप्पी, we are okay, but after some time we will be hankering for some other thing. So the point here is that we have to pull our mind from that situation repeatedly. Number 1. Secondly, we have to make our soul very strong. I will go to the back this sketch. अपनी सोल को हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि उसमें इतनी पावर है कि अपनी उस इंटेलिजेंस को ड्राइव कर सके. जो सोल बोले, जो रथ का मालिक बोले, वही इंटेलिजेंस करे, उसके हिसाब से माइंड चले. अब सोल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है. Meditation. In my experience, I have seen so many yoga, so many things we have done, but the most effective is this meditation. Mantra means who can deliver the mind, and this is not a sentimental fact. Now I am not promoting something, but it is a real fact. It has been proved scientifically that if we chant this mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, slowly and slowly you will be able to control your mind and make yourself strong. This is a long topic. We can take it in a sometime separate session, but this is the nutshell. Meditation of this mantra, detachment, and doing this practice repeatedly. So anyone who would like to contribute on this?
like to share my personal experience. I was guided to Om chanting by one of my late friend who I lost during the COVID. And he gave me by chant at least Om for about 21 times in the morning. And after that, I was a staunch non-vegetarian. The influence of this is I am more at peace with myself. I am a pure vegetarian now. I guess get less agitated, more relaxed. So I think these kind of things do help. Absolutely. And I find a change in myself, and the change is for good. Great, sir. Great. It's very pleasant to hear. और किसी को माइंड कंट्रोल करने में डिफिकल्टी आ रही है या सब कोई बहुत इजीली कर पाते हैं? Anyway, this is recommended. Indrajit, if you have done it, it's just great actually, you know, but it's controlling mind is not easy. It will absolutely get into a reaction mode, it will get into a bias mode, but the real winning is this, if you are able to control it. And I think with the age and with maturity, it makes change. But then that is not the criteria. There are many young people who are very calm. They have controlled their mind in different situations. So, yeah, I think difficult to do, but very important to ensure. Absolutely, Asim, I fully agree. भगवान खुद बताते हैं, अर्जुन जब कहते हैं कि अर्जुन जैसा जो आदमी है, जो कितना पावरफुल है, उसके कितनी उसकी मतलब जानते हैं उसकी जो क्वालिटीज को. He said कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. वो कहता है मैं वायु को I can control air, हवा को कंट्रोल करना हमारे लिए कितना सोचना भी पॉसिबल है. He said कि I can control वायु, I can control air, but I cannot control mind. तो ऑफ कोर्स इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता. डेफिनेटली जो भगवान ने बोला है, लोगों ने उसको आजमाया है और कर रहे हैं, इट कैन बी डन विद अटैचमेंट एंड प्रैक्टिस. जो लोग कर पा रहे हैं वो ज्यादा अपनी हैप्पीनेस और पीस को एंजॉय कर पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पा रहे मतलब वो भी एफर्ट कर रहे हैं सब लोग. No, in fact, you know, I would just like to mention here, as Indrajit and we work together, we travel together, and you know, many times we do things, work together and travel together. And I've seen in a particular situation when there is a situation which is maybe a traffic jam or a bad situation to be in, or food is not good or something happens, I have seen the response of Indrajit and response of mine is very different. Indrajit is very calm, very accepting. And, you know, he take it as if it is a situation, you know, it's okay and it can happen, it's not in his control. Whereas, you know, I would react, why this situation has become like this? Can we change this situation? We should have taken care of it. And that shows, you know, two minds. And, you know, I keep learning from Indrajit that way, that, you know, how he's able to keep calm in such a situation also. And I think that's, you know, that's great if you can reach to that stage. And I really appreciate Indrajit you for that. Thank you, Asim. I'm not a big saint और इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं है. We are trying our best और everyone can do this thing. Okay, let's move to the next point. Being present or mindful. This is very important. भगवान कहते हैं in chapter 241 श्लोका, the person who is having the intelligence resolute, determined है, एक बार जो सोच लिया उसको करना है, he is successful. And this simply means we all of us know doing one thing at a time. अगर आप एक वक्त में चार चीजें करने की कोशिश करेंगे तो इनफैक्ट हमारा वो चारों में से कोई भी चीज नहीं हो पाएगी. So we have to be very resolute. We have to do one thing at a time. And ये मल्टीटास्किंग का जो कंसेप्ट है ना, ये तो बिल्कुल मिथ है. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने थोड़ा इस पे स्टडी किया है. आई विल शेयर. ये जो स्टडी है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में ये इसको पब्लिश हुआ था. मल्टीटास्किंग की हमारी जो डेफिनेशन है कि एक वक्त में हम दो तीन चार चीजें करें. बेसिकली वो ऐसा होता नहीं. आवर माइंड हैज मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और उनके ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस हैं. बट इवन देन वी आर एबल टू डू वन थिंग एट ए टाइम. जो मल्टीटास्किंग होती है, एक वक्त में दो चीजें करना, बेसिकली आवर माइंड कीप्स ऑन स्विचिंग बिटवीन दिस असाइनमेंट टू अनदर असाइनमेंट. वो इतना सटल वे में होता है कि हमको पता ही नहीं लगता है. और बड़ी फनी सिचुएशन है, आपको मैं रियल बता रहा हूँ. एक बार क्या हुआ कि वन ऑफ आवर क्लाइंट इन गुड़गांव, we went there at a appointed time 11 AM और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी, उनके ऑफिस से बाहर 2-3% are standing waiting for their turn, that both call and then we'll go. And when I entered the door,
just to inform him that we are there and we are waiting for our turn. Even I could not inform him. Why? Because two persons were sitting in front of him and he was speaking to a person on the phone और लैपटॉप पे भी साथ में काम कर रहा था. ऐसे सिचुएशन हम देखते हैं, but in my understanding this is not going to work, this is not working, so we should try to do one thing at a time. Japanese people are very much on this, so they are able to focus their mind. Now coming to the very important discussion, work with the spirit of detachment. Inderjeet ji, sorry, I am interrupting. I have seen at many places people are asking, you should be in a position to do multitasking. Absolutely sir, वो multitasking का वहाँ मतलब ये है कि हम एक दिन में ज्यादा काम कर लें, but उसका मतलब ये नहीं उस moment पे हम एक दिन में एक moment पे ज्यादा काम कर लें. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त ऑब्वियस सी बात मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ ना. अगर इस वक्त मैं आपसे बात करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखूंगा तो मैं ना तो उसको देख पाऊंगा ना आपको देख पाऊंगा, और आई विल बी एबल टू डू ओनली वन थिंग एट ए टाइम. उस हो सकता है 2 सेकंड के लिए मैं आपकी बात सुनूं, फिर 2 सेकंड के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखूं, तो उस वक्त में हमारा जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है. So this is not recommended. This is the moment of presence हो गया. This is the kind of for one minute it's fine, but like for 30 minutes if we are doing and in between some other task is coming, so both tasks should happen at least parallelly. See, moment of presence, ठीक है, for 1 minute we are talking together and watching to each other instead of the screen, right? But if for 30 minutes if we are doing some activity, in 30 minutes we are doing different activity, like somebody is coming, we are talking to him, at the same time we are also listening to you. So this is the kind of I think this is देखो सर, अगर बहुत ही छोटा सा इंटरप्शन है जिसके अंदर में हमारे माइंड का एप्लीकेशन, ब्रेन का एप्लीकेशन बहुत कम है, देन इट इज ओके. जैसे आप जब वर्क कर रहे हैं तो साथ में फोन पे बात भी कर सकते हैं, बट अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, क्लाइंट से मीटिंग करनी है, उस वक्त में आप सोचेंगे 2-3 काम साथ में कर लेंगे, तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो डाउन ही होगी. एक बार आप किसी काम को स्टार्ट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल राइटिंग ए मेल, हम हमेशा बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो कोई मेल लिख रहे हैं, एक हमारा माइंड थॉट प्रोसेस बना हुआ है, उसको लिखना शुरू किया और उस वक्त आप लिखेंगे तो शायद 10 मिनट्स में आप वो पूरा मेल टाइप कर देंगे, बट इन बिटवीन आपने आधा मेल लिखा और उस वक्त में किसी का फोन आ गया, आपने 10 मिनट बात किया, उससे माइंड आपका एजिटेशन हुआ, तो आप इफ यू कम बैक टू द सेम प्रीवियस थिंग, मेल लिखना है, तो आपका जो पूरा थिंकिंग है ना 10-15 मिनट का जो हमारा हमने एफर्ट किया हुआ है वो जीरो से करना पड़ेगा. Actually, Satyavi, you're right, and this is the latest things that we should do multitask, be able to do it and all that stuff. But I think the point is here that what is being said by Gita and what is our learning from here is that if you do multitasking, it's a fact of life that focus to kam hota hi hai, sir. Can I share a small example? As Inderjeet ji was saying, for example, when I used to make a report, which involves a lot of mind and the thinking, I used to normally switch off my phone or keep it in silent and even switch off my mail. And then when you do it, the same report which you make in half an hour, and when you are in office and doing a lot of things, the same thing will take about 2 hours. This is my own personal experience. And if you try it, you will definitely see, because as जैसे उन्होंने बताया इंद्रजीत ने, when you start to come back to that same thing, like the mail that he said, you are again wasting that 2-3 minutes again, because again you are recollecting those thoughts and again coming in. So I would suggest आप try कीजिए. I have experienced it. It's something which is works very well. Absolutely. I can also just add, Vikram, on this. We all have mobile phones, our mail, our messages, our what, everything coming on mobile phone. And during COVID we went more onto screen and all. आज की डेट में हमारा जो screen time होगा, अगर आप देखो, किसी का भी 6-7 घंटे से कम नहीं है. We keep getting diverted, we keep getting things on mobile. I decided few months back, first I removed all notifications apart from phone call. Yes. No notification, no email notification, no WhatsApp notification, no group notification, nothing. Na sound aayega, na light jalegi. That is one part I did. Second, I decided time in the day when I will check my email IDs, when I will check my WhatsApp, and I informed my team members that this is the time slots, thrice in a day I will check. I'll not keep on checking my mail and WhatsApp whole day. When, if something is urgent,
please call me, because I'm going to check my mail 4 to 5 only. It has given me so much of time, energy, and focus. I can't tell you. And I just agree with Absolutely. Vikram sir said we should try this. Absolutely. Understood. Yeah, yeah. This is the good point. Actually, we should set the time for a particular activity. Great. Yeah. Nice. Thank you, sir. Thank Good. you. Thank you. Good. So moving to the next point, work with the spirit of detachment. ये भगवद गीता का सबसे फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. So we have right in the duty, we don't have the control on the results of that action. We use it during appraisal time. Yes. Always. Yeah. और कई बार ना बहुत ये मिस कोटेड भी है. बहुत लोग ये कहते हैं यार इसका मतलब हम एक्शन करते रहे, हमको रिजल्ट नहीं चाहिए. We not need success, but इसका मतलब नहीं है. Let's try to understand कि इसका रियल मीनिंग कैसे है. क्या हम रिजल्ट नहीं चाहिए या रिजल्ट चाहिए? First thing is that it says that we have to focus on the karma. We know जो भी रिजल्ट आएगा, that is the outcome of that action we are taking. So we have to focus on the action at that moment. So this will give to the this will be leading to the right action, right result. This doesn't mean आप इसका ये मतलब है कि you give sufficient time, detailed deliberation, everything you do on this what to be done. This doesn't say कि आप बिना सोचे काम कर दो, पूरा को सोच लो, सारा प्लान कर दो, everything it has to be done in a very controlled way. But once we have decided what to do, at that time we don't have to see इसको क्या होगा, इसको करने से नहीं होगा या out of focus नहीं होना. So we have to monitor our actions. दूसरा इसमें क्या होता है कि if we are too much focused on the results, हमारा पूरी एनर्जी उसमें लग जाती है, we are worried. और कई बार क्या होता है कि अपनी पूरी कंसंट्रेशन ना लगाने की वजह से जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो हम सुटेबली नहीं करते. अगर मान लो मैं बहुत ज्यादा इस बात से डिस्टर्ब हूँ, यार मेरा कल अप्रेजल होने वाला है, जैसा भी ब्रजेश बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 24 घंटे हर वक्त एक चीज सोचता रहूंगा कि कौन से एक्शन से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, कौन से एक्शन से वो खुश होगा, कौन से एक्शन से प्रमोशन मिलेगी, तो मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा. So this means that we have to be in the present. So next is workplace ethics. ये बहुत ही इजी है समझना. In भगवद गीता chapter 16, Krishna says, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, greed, anger, or greed, काम, lust. Greed, anger, and lust. These things are like our gateway to hell. नरक के द्वार हैं. And in present company situation also I have seen in our company, in like I can give at least 8 to 10 names in my company, or like in my experience, where the people have lost their jobs due to any of this situation. I have seen. मतलब ऐसे बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से या किसी ना किसी फीमेल के साथ में किसी इशू की वजह से ऐसा सिचुएशन में पड़ गए जिसमें वो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा. एक जापानीज कंपनी में मैंने काम किया है, वहाँ पे एक ना बिल्कुल मजाक में बोलते हैं, आप कितना मर्जी कैसे भी परफॉर्म कर लो, आप पीटीसी करते रहोगे, आपकी नौकरी चलती रहेगी. बट इफ एनी ऑफ दीज टू थिंग्स हैपन, अगर आप किसी फाइनेंशियल चीज में अगर आप पकड़े गए या आपका किसी के साथ कुछ अफेयर या कुछ गलत ऐसा कैरेक्टर पे कुछ बात आई, so they won't take even a moment to take action. और we have also seen the situation जहाँ पे लोग एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं, एक दिन अचानक कुछ हुआ या 2-4 दिन किसी के साथ में कुछ दिक्कत हुई तो फिर वो नौकरी छोड़ दिया या बिजनेस कर दिया, किसी क्लाइंट के साथ में कुछ झगड़ा हो गया. So we have to take utmost care of these 3 issues. It's difficult, but this is the real fact. Okay. So we say, Indrajit, in our company, we say Honeywell hires for skills, fires for behavior. Yes, absolutely. और मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ. I won't name. असीम, आप एक हमारे जो क्लाइंट थे, देखो उसमें जो कितने सीनियर लेवल पे जो आदमी थे उनके साथ हमारा अच्छा काम था, but one day he was not there. मिराज कंपनी आपने सुना होगा. We were working Asim and me together for them. And one of the senior person who was working at his CEO level, he was not there at a particular day.
नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजिंग स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें तो बहुत इजी है इस बात को समझना. गीता सेज, कृष्णा सेज इन भगवद गीता चैप्टर 17 टेक्स्ट 15 that our speech should be truthful, pleasing, beneficial. तीन चीजें होनी चाहिए. ट्रूथफुल होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी एजिटेटिंग टू अदर्स. इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट. ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें हैं, ट्रूथफुल भी होना, ट्रूथफुल होना और प्लीजेंट होना. बट स्टिल आई हैव सीन सेवरल लीडर्स इन माय लाइफ हु आर एबल टू मेंटेन दिस थिंग. और मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि आई हैव स्पोकन लाइज ऑन सेवरल ओकेजन्स. बहुत बार झूठ बोलते हैं, और उनमें से 25-30% मैंने ऐसा एनालाइज किया कि अगर मैं झूठ ना बोलकर सच भी बोला होता तो भी द रिजल्ट वुड हैव बीन सेम. कई बार हमको कोई आदत पड़ जाती है कुछ लोगों की कि अपनी बात को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए, बात में कुछ ताला डालने के लिए, अपनी अचीवमेंट को ज्यादा करके बढ़ाने के लिए वी कीप ऑन स्पीकिंग लाइक लाइज, बट वी कैन कंट्रोल दिस. एक सिंपल और चीज है सर, लाइक ऑल ऑफ अस वी आर वर्किंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हम वी आर लीडिंग ए कंपनी. All of us we are unique. All of us we have our thought process. All of us we have our stance, our like thinking. All of us we want to contribute towards the different viewpoints. We have seen data है जो study बता रही है कि only 10% conflicts are based on the difference of opinion. 90% are based on the bad tone. अगर हमने बात करने में टोन यूज नहीं किया, गलत वे में बोला, उस लोगों को इंसल्टिंग लगा, that is the main cause of conflict. It's like a very simple thing. जैसे बूमरैंग की बात करते हैं, you will get what you give. It reminds me of the Newton's third law of motion, equal and opposite reaction. जिसके साथ आप जैसा बिहेव करोगे बिल्कुल वैसा वहां से वो घूम के बात आएगी. So we are dealing, when we are in the very leading situation, we have to take care of our speech. Very important. Because very much like stone on this part. Anyone on about this managing speech? I think I'll give you an example. Maybe most of us have heard. एक राजा ने एक साधु को बुलाया तो उससे अपना पूछा कि भाई कैसा है हमारा फ्यूचर. तो वो साधु कहता है कि भाई राजा साहब, आपके सामने आपके सारे परिवार के लोग मर जाएंगे. उसने बोला सच? तो राजा ने, बिकॉज इट वाज द वे इट वाज सेड वाज नॉट अप्रोप्रिएट, तो उसको लटका दिया कि ये तो मतलब इसको फांसी पे लगा दो. फिर उसको दूसरा साधु आया, तो आई एम जस्ट कटिंग इट शॉर्ट. तो उसने पूछा भाई हमारा क्या फ्यूचर है. वो कहता है राजा साहब आप तो आयुष्मान हैं, आपकी तो बहुत उम्र है और ये है वो है. So this is how you say things, you know. Both said the same thing, but in a different way. आप सबसे ज्यादा जिएंगे अपनी फैमिली में, आपकी उम्र सबसे लंबी है. Correct. So this is how you say it. Well, very good example. Yeah, thank you. So let's move to the next discussion. Now situation is that sometime it may happen that we have tried our best, we are speaking good to the people, we are doing good for the company, for the teammates, and we have a very good intention. Still we will find some people who are not into that mode of working. लोग आपने देखा होगा अपनी टीम में बोलते हैं सर हम तो बड़े पॉजिटिव हैं, बहुत आइडिया देते हैं, लेकिन मेरे जो साथ के लोग हैं, मेरे जो सबऑर्डिनेट हैं या मेरे जो इमीडिएट सीनियर्स हैं, वो मेरे को नेगेटिव फीडबैक देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, मेरे बारे में गलत बोलते रहते हैं. So let's see what Bhagavad Gita says about this. How to deal with the negative elements. Krishna says that let's take this as a opportunity to make us humble. जो भी हमको फीडबैक दे रहे हैं, या तो वो फीडबैक पॉजिटिव होगा या वो फीडबैक राइट होगा या रॉन्ग होगा. अगर वो फीडबैक राइट है, so it's a good feedback for us and it's God's arrangement to give that feedback. We should improve on that. Secondly, that feedback is not correct. Whatever he is saying, that is not correct. So let's take this opportunity to understand कि हमारी अभी हमारा लेवल कैसे आया, हम अपने इमोशनल जो टर्बुलेंस को कितना मैनेज कर पाते हैं. So it's a practice for us. उस वक्त में हमको ये सोचना चाहिए कि यार मेरे को कैसे मैनेज करना है, instead of giving a befitting reply. किसी आदमी कुछ नेगेटिव बोल दिया, हमारे को बिल्कुल अर्ज आएगा कि यार इसको मैं अभी इसके ऊपर नीचे कर दूं. Indrajit, can I add something here? Yes, simply. So guys, just want to add on this. This is a very important thing because normally our reaction comes when we hear something negative about us. Now there is a different take I want to take, and
we share in our training programs and leadership program also, and behavior shifting also. See what happens, a person who is giving you a negative feedback or something you need to improve or something you're not doing right, that person is risking his relationship with you because he may not like it what he's saying. But think over it. That person is so close to you, he needs your benefit, that he is risking his relationship with you and still giving you feedback to improve, than the person who doesn't say something on your face but go and say on your behind to 10 other people. I think a person who's criticizing you, a person who's talking to you, take it constructively. Rather ask him more question, why he thinks so, what he thinks you can improve. That number one helps in maintaining that relation. Number two, that also helps in improving as a person. I always respect a person who come to me directly and give me a negative feedback or a criticism, because that way he's giving me an opportunity to improve. And also I respect that person because he's taking a risk of our relationship. Because जैसे इंद्रजीत ने कहा, हमें कोई नेगेटिव बोलता है, गलत बोलता है, तो हमें बुरा लगता है, हम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा आता है, सब कुछ होता है. So this is my take on this, and I think that really helps to all of us. See if we can look at that way. Thank you, Asim. And I won't hesitate to accept कि जो असीम बोल रहे हैं वो immediately actual में इनकी लाइफ में वो implemented है. ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे, but or at several occasions I have seen he's taking this any kind of feedback very positively. इसमें एक पॉइंट और भी है, like if we what we can do in that situation, या तो हम उस आदमी को एकदम से दाएं बाएं करके befitting reply करेंगे. His habit is not going to change. In fact, he will try to drag you more and more. आप उनके साथ और गंदे गंदे होते चले जाओगे, वहां से कुछ फायदा होने वाला नहीं. Okay, so let's move to the next point. Next sutra is that the 12th sutra, last and final. And if we have tried our best, if we have done our best efforts, we have planned everything, we are doing our best preparation, best effort, everything we are doing, but still we are not able to get the results, और हमारे को जो desirable situation नहीं meet होती है, then what we should do? What Krishna says about this thing? Krishna says then keep everything, then rest everything on you. आप उसको भूल जाओ. If we have tried our best, then you are leave everything to me. I will take care of that. So whatever is the outcome, Gita says that we have to take the gracefully, उसको हमको accept कर लेना चाहिए. चाहे किसी प्रोजेक्ट में हमको फेलियर हुआ है, सक्सेस हुआ है, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग गए हुए हैं, मीटिंग क्रैक हुई कि नहीं हुई, बिजनेस मिला कि नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि नहीं हुआ, किसी डिस्कशन में जाके हम लोग उसको कन्विंस कर पाए कि नहीं कर पाए. It will happen. Everything is not going to happen our way. So we have to take it very positively, or it has to be accepted as it is. एक अपनी लाइफ में मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसको मैं बोलता हूँ 30% का फॉर्मूला. I have told to my family member and kids, this means that whatever best you plan, whatever best arrangement you do, still 30% of the things are going to deviate from your actual plan. So we have to be ready for that. If we are ready for that, if we are able to accept those deviations, we will be calmly placed, we will be happy, and we will be focused on the actual what to be done. So with this, I think that 12 learnings are over, and last and final, I will discuss one thing. जहाँ से हमने start किया था, how to get opulence, success, and victory. हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि हमको ये सब चीजें कैसे मिलेंगी, and we have different discussions, and let's see कि बाकी जो लोग हैं, जो इसके leaders हैं, scholars हैं, what do they say? Colin Powell बोलते हैं कि we will get the success by perfection and hard work. पहले से perseverance and sacrifice. आगे बोलते हैं consistency, some of small efforts repeated, sense of purpose. So many things we are hearing. ये सब लोगों के अपने अपने वर्जन हैं. अब let's see कृष्णा क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, भगवद गीता में क्या बताया गया है कि हमको कैसे सब मिलेगा. This is the last sloka of Bhagavad Gita. We have 18 chapter in Bhagavad Gita, and in the last chapter, this is the 78th last sloka. It is spoken by Sanjay. What are we saying? Yatra Yogeshwar Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Shri Vijayo Bhuti Drava Nitir Miti Mama. Which means कि wherever is Arjuna, wherever is Krishna, there is
definitely opulence, victory, power and morality, which gives us this indication. कृष्णा के पास ये सारी क्वालिटी थी जो अभी हमने डिस्कस की हैं, जो 12 things that we have discussed. Arjuna had all these things, and he was always remembering Krishna, and he was having all this opulence, success and victory. So same thing is applicable to us. If we practice those 12 formulas that we have discussed, if we accept the presence of God, and if we remember him every time, we will definitely get opulence, success and victory. So that's it from my side. You can have a question, answer or discussion. Fantastic. If you can remove this slide, I think we all will be able to see and have a little conversation, Inderjit. Yes. I think it went very well. I just want to share a book which I recently read. I'll share the link there also. I don't know, Inderjit. There is a book. This is called My Gita. This is by Devdutt Patnaik. He has written a lot of things on history. This is a fantastic book, and whatever Inderjit talked, it will build further on that. It explains to you Gita, and then it also talks about various learnings, how you can apply. It's a very good book. I'll share that. But in the meantime, I think there are a lot of leaders, entrepreneurs, and there are people who have read Gita and they are following also. So if we have certain questions or if there is anything we want to discuss, I would also request if we all can switch on our camera once so that we can click picture. Mr. Tyagi, maybe you can get up for a minute and we can have a picture. Everybody's camera on, please. One just for 10 seconds. If you can show your faces so that we know all these people who attended this. Yes, Katyal Sahab, your hairs are looking very nice. Don't worry about that. You always look handsome to us. Okay, Sukhbir, Ashish, Mayank, Puneet. Amrish Bhatia ji. I don't know who's this. Sukhbir Hooda. Yes. Samir. Yes. And Sukhbir, you're not the Amrish Bhatia, sir. I think he's gone out. But fantastic. I think we have a lot of people right now. And I can just click a picture. Please smile. You're on camera, guys. Fantastic, guys. I'll share these pictures on our group also. Any questions and thoughts, guys? We have some time left. It was a fantastic, connection with the Gita and management. I have read Gita a couple of times, and mostly Prabhupada's and those versions, which explains everyone explains in their own way. But I think what extract related to management has been picked up by Inderjit is fantastic and very interesting. So I'll go back again and look for more areas. I think I always use theory of perspectives, because when controlling anger and managing in a better way, perspective really plays a big role. Like if a customer or anybody calls you and he has a problem, so I always guide my team or coach my team to look at from where the person is coming, like why this problem, why is he talking like this, put yourself into his shoes. So the perspective really plays a big role to control your anger, to control your mind, to listen carefully, to look for a solution. So this is my learning. That really helps. Thank you, Brijesh. Thank you so much for encouraging words. Fantastic. And I think it was explained in a very simple and practical way also. In fact, I have heard in the earlier, but I think it's new learning every time. Sir, Puneet this side. Hi, Puneet. I have a question regarding, like in second sutra, you have mentioned that what people wants is this money or this praise. But in solution, you have mentioned that it is the example which motivate a people. Can you please enlighten it more, or you can elaborate it more? Thank you, sir, for asking this question. You are right कि उस formulation में एक बात किया गया था कि I set an example for the teammates. और उसमें एक quotation ये भी था कि I read Bhagavad Gita and we take this Bhagavad Gita as a manual to run an organization. So if we read Bhagavad Gita, we will have different understanding. Our learning will be enhanced, and we will have different ideas to handle different kind of people. ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए आप प्रेज करते रहेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा. किसी को प्रेज भी करनी पड़ती है, किसी को कभी-कभी पुश भी करना पड़ता है. So we need to have a good understanding of human mind. और वो अंडरस्टैंडिंग इनहांस करने का सबसे अच्छा सोर्स है भगवद गीता.
This is my take on it. Thank you, sir. You can ask further if you. Hello. Hello. JP this side. Someone asked for my email ID. I'm putting in the chat box. Yeah, okay. And Inderjit has been living in Vrindavan now. If anybody of you want to visit Vrindavan and you can have the best of darshan and learning, you can contact Inderjit. I'll share his contact details in terms of email ID as well as phone number, and you would be able to. He'll be happy to host you in that, wonderful Nagri. Am I right, Inderjit? Absolutely. You are saying you are right. And I will be happy to. Can we have your slides sent to us? Definitely, sir. Definitely. Thank you. I will do that. So I will send slides in a PDF form on our learning group. And secondly, I will also, we have recorded, so we'll share the recorded version also on our YouTube channel. And there's one more thing to it, like Bhagavad Gita को पढ़ना मतलब time निकाल के regularly पढ़ना कोई इतना easy नहीं है अपने life में, routine में. So what we have started from last some time, daily morning I post one translation of one shloka in Hindi and English. सुबह सुबह बस एक मैसेज आएगा जिसके अंदर में आपको हिंदी और इंग्लिश में एक श्लोका का ट्रांसलेशन होगा. It takes only a few seconds. तो एक मॉर्निंग के लिए आपको एक अच्छा लर्निंग मिल जाता है. This way, few seconds every day we can go through the Bhagavad Gita in some time. So if you are interested, I can send a invitation in this group. So you can join that group. There is no other communication as such. Just one message in the morning. That's it. So anyone, one of you are interested, you can ping Inderjit, and I think he will add you in his, list of people whom he is sending his message. I will send you the invite, like in the box. Whoever is interested, they can join. Great, fine. Great. I think, guys, this is just the beginning. People, I could see some people are already following, some people are aware, and some people have just first time maybe heard about Gita, its learnings and how we can put it in our management. But this is an amazing journey, and this journey keeps as Inderjit rightly said, it's not easy to understand the whole stuff. But if you're on this journey, I'm sure we keep learning, and that's our theme also of this group. Life keep teaching, so keep on learning. So that's how it is. And if we have any more question or insight, otherwise maybe we can say thank you to Inderjit and continue to our karams for the day. In fact, I should say thank you. Just one further question. Yeah, Mr. One is that it's a beautiful presentation. Thank you, Inderjit, and thank you, Asimji, as always, a very nice presentation. Thank you. Asim has a big contribution in that. एक छोटा सा question था, which book? I saw the Gita book also. I have in fact जो देवदत्त पटनायक की I have read it also. Any book which Inderjit you could suggest which has a simple way to understand Gita, not generally specifically in our business front, but even otherwise, which is a simple form and it has a translated form for normal people to understand. Any book that you could recommend? Thank you so much, Vikramji, asking for this very important question, because these days we have several versions of Bhagavad Gita. और मैंने जब शुरू किया था तो मैंने कई सारे वर्जन पढ़े हैं. But I will definitely recommend you to read Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada of ISKCON founder, जो अभी विदेशी बता रहे थे. उसमें वो समझ नहीं आएगा ना sir. It has to be something which we understand as a sir, translation. We have beautiful purpose with each shloka. एक पहले संस्कृत का श्लोका है और साथ में उसके वर्ड मीनिंग है जिसमें आप उसको ब्रेक करके समझ सकते हैं. Then there is a translation, then there are purpose. So if you read those purpose, I am really confident कि आपको बहुत अच्छे से वो चीज समझ आएगी. This is my experience, and I can send you a soft copy of that. Also, I can send a soft copy. आपको hard copy चाहिए तो hard copy भी भिजवा सकते हैं. This is the best translated version हिंदी में या इंग्लिश में रहेगा? Yes sir, English हिंदी दोनों में version available है, which will have the complete details, shloka, word meaning and purpose also. It will be very nice if you can send that link. We can go through it. That will be a very nice. You can share the link in the learning group. Yes, most of us are there. I will share the link also, and I will also request you to please join that my WhatsApp chat where I put the Bhagavad Gita message every day morning.
Sure, we'll do that. Apart from word meaning and translation, does it have the real interpretation of those also? Absolutely, sir. पहले वर्ड मीनिंग है, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद नीचे पर्पट है, तात्पर्य है. उस श्लोक का सिंपल लैंग्वेज में हमको कैसे समझना है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. दिस इज भगवद गीता एज इट इज. एज इट इज का मतलब है जो भगवान कृष्ण ने बोली है बिल्कुल एज इट इज जो मैसेज आया हुआ है वो है. Apart from purpose, can you also like explain something related to, for example, in your real life, how those have been implemented, maybe some scenarios on that? Can it be possible to share? Definitely, sir. मेरी जर्नी काफी लॉन्ग है और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सेंट हूँ या एक दिन में सब ये हो गया है. Reason I'm asking because it would really help in terms of like how, though means individually can interpret based on their experiences or their journey of life, but apart from that, it will also help maybe in case where we want to implement those scenarios. Definitely, sir. I will inform, like share what is my experience. देखो मेरे साथ जिंदगी में एक बार ऐसा सिचुएशन आया है while I was working कि the situations were not right. मतलब I was kind of frustrated, disappointed from the work side. Then I had different options available to me. और मैं नटशल में बता रहा हूँ, उनमें से सबसे जो इफेक्टिव रहा that was reading Bhagavad Gita and doing this meditation. This meditation helps a lot. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I'm not saying this is a sentimental again and again. This is a scientifically proven fact. I can share you the research and studies about this thing. If you devote 7 minutes a day, this take only 7 to 8 minutes to complete one round of japa. If you chant on the fingers also, if you devote 7 to 8 minutes, I can definitely promise you that within 10, 15, 20 days you will see the difference. क्या difference आएगा आपको बताता हूँ मैं. जैसे मान लो अभी असीम बता रहे थे, आप कोई स्थिति देखो लाइफ में ऐसे नहीं आएगी जब सब चीजें सब बिल्कुल कंट्रोल में होंगी. जो मैं चाहता हूँ वो मुझको मिल जाए, वो मेरे को तनख्वाह मिल जाए, वो मुझे कस्टमर मिल जाए, वो मेरे को बिजनेस मिल जाए, वो मेरे को रिलेशनशिप मिल जाए. Is not going to happen. Some things are definitely going to be beyond control. Now, how do we react to them? So if we do this meditation, if we read Bhagavad Gita, then we have the proper perspective of that situation. उसमें क्या होगा कि ठीक है, अब ये हो गया, मान लो फ्लाइट लेट होगी हमारे किसी कुलीग की वजह से. आप बिल्कुल रेडी थे क्लाइंट के वहां से अपने घर आने के लिए. फ्लाइट का टाइम था 5 o'clock. उसके हिसाब से आपको 3:30 पे अपने क्लाइंट के यहाँ से निकलना था. आप बिल्कुल रेडी हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं. आपका एक जो कुलीग है उसने 15 मिनट लगा दी किसी चीज में, उसकी वजह से आपने बड़ा रश किया, फ्लाइट वहां से मिस हो गई. नाउ व्हाट टू डू? उस वक्त में आपकी स्थिति जो प्रैक्टिकल में एग्जांपल दे रहा हूँ काम आती है. व्हाटएवर हैज हैपेंड, जब उसका राइट टाइम था, जब 3:30 हो रहे थे, उस वक्त में जाके आप उसकी सपोर्ट कर दो, उसको हेल्प करो ताकि जल्दी से आपके साथ आ जाए वो. बट एक बार लेट हो गए, फ्लाइट चली गई, तो उसके ऊपर यल करने का, गुस्सा करने का कोई परेशानी नहीं है, कोई इसमें कोई फायदा नहीं है. सो स्लोली एंड स्लोली यू विल कम टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे पहले बहुत माइनर चीजों को आप एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, फिर थोड़ा सा उसके हायर लेवल पे करोगे. मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो दिस हाउ आई कैन एक्सप्लेन. वी कैन टेक सेवरल एग्जांपल्स ऑन दिस. This is really good example. I can really understand. जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो हम रश में थे, ट्रैफिक में थे, किसी तरह से 500 रुपए मेरे से गुम गए. तो शुरू में क्या होगा कि अगर मेरे पॉकेट से 100 रुपए जाएंगे तो हम लोग इतना परेशान नहीं होते. ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, गलत हुआ, बट इट शुडंट हैव हैपेंड, बट अभी ठीक है, लेट्स टेक इट. बट अगर 5000 जाएंगे, 50,000 जाएंगे, तो हमारे जो डिफरेंट एजिटेशन का लेवल आ जाता है. तो स्लोली एंड स्लोली जो डिस्टर्बेंस का जो लेवल है वो आपका कंट्रोल में आता चला जाएगा. आज आप 100 रुपए की चीज परेशान होने पे दिक्कत में आते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 100 रुपए वाली चीज पे परेशान नहीं होंगे, 500 वाली पे होंगे. Still you do meditation, you control, you read Bhagavad Gita, you try to practice the things. There will be situation when 5,000 भी लॉस होगा, उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे. मैं ये नहीं कहता हूँ कि लॉस हो या लॉस होना चाहिए, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर अनप्लीजिंग है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें. नहीं, आपने जो एग्जांपल दिया है इस एजुटेशन को लेकर, एटलीस्ट रिलेटेड टू मॉनेटरी पार्ट, राइट, आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ. आज की डेट में मुझे उस चीज को लेकर एजुटेशन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दैट फेसेस कि इवन इन द करंट सिचुएशन रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू दैट, बट रियली इट डिडंट इम्पैक्ट माय करंट सिचुएशन ऑफ माइंडसेट एट ऑल. So I control myself. Yeah. Actually, no, you know,
when I read Bhagavad Gita in a summary form, and then for the last 3-4 years, I've been interacting with Inderjeet, and there are a few more friends who have been followers. You know, one thing which I really learned is there are times when things were not in our control, which will make us frustrated. And you know, while doing a training program, I spoke something, and one of my colleagues was sitting, and she wrote, and she said, it's like a quote, you know, seems. So I said, if something is not in your control, why it should bother you? If something is not in your control, why it should bother you? And if something is in your control, why you let it bother you? Absolutely. अगर कंट्रोल में है तो ठीक कर लो यार, कंट्रोल में नहीं है तो क्यों बॉदर कर रहे हो? It will pass, it will be taken care, don't worry about that. सिचुएशन में मैनेज कैसे करोगे उसको, सिचुएशन को मिटिगेट कैसे करोगे, अपने आप को सेन कैसे रखोगे सिचुएशन में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज आवर कैरेक्टर विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, यू नो. पर अगर मेरे कंट्रोल में है और फिर भी मैं उसको अपने ऊपर हावी होने दे रहा हूँ, बॉदर होने दे रहा हूँ, then there is a problem in our karam, you know. Yeah. So You rightly said couple of years back, you rightly said, because couple of years back, I saw one very small, I would say video clip. It was an animated clip. It really made a major impact on my mindset. It's just 1 minute clip. It talks about like the same thing that you're talking about. Like one person is asking the other person, do you have a problem? The person says yes. Then he said, can you do something about it? He said, no. Then why worry about it? And if you can do something about it, then why worry about it, right? Absolutely. In those situations, why you need to worry about it, right? So one thing you can control, you can control. Don't worry. इसमें एक important aspect और है सुमीर, कि when we are giving best to our work, जब आप काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, then you do your best. We Correct. Should try our best. We should give our best effort. And once we have done this thing, उसके बाद में आपको टेंशन होता भी नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ. Right. तो आपने अपना बेस्ट कर लिया, then what you can do? आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दिया, उसको कोटेशन आपने अच्छा दे दिया, क्लाइंट को 4-5 बार फॉलो अप कर लिया, नहीं क्रैक हो रहा तो भैया क्या करोगे? ठीक है, ओके. But I have seen situations still like being pleasant and being, you know, truthful. The way you talked about it's really good. It makes a lot impact. But I have seen situations where you are being taken for granted as well in many situations, and people default expect you like that, and then you know you don't. I don't like believe in levels, or I would say, you know, you need to reach to the levels where you want to see yourself, but people take the advantage of those situations, and you sometimes, you know, don't grow professionally as well. You keep pleasing people most of the time, being a good motivating leader all the time, you are being appreciated, but at the work front, there are still a lot of like politics where people do play, and then, you know, you don't grow at the career level. Your graph doesn't grow that way, but you keep on motivating yourself. You're good, right? All that happens. But I've seen this being played politically a lot. All right, Can I add one example? Sorry. If you have seen the recent Dhoni's interview after his CSK winning the match, he said they were asking him, what do you do during the matches and sessions and all? He said, we focus on the process. Yeah. You know, and during the match, he said, we focus on the process and try to see how we can improve it. We do not bother about what the results come. And he's, I think, one of the most cool captains, one of the most equanimous persons. And that is one of the reasons that he's able to take good decisions. Yeah, that's very valid point, a very good example in a practical situation. एक इसमें और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है समीर, जैसे आप बोल रहे थे ना कि किसी को बार बार प्लीजिंग वर्ड्स बोलते रहेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगा और हमको फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड है. तो अभी जो हमें भगवत गीता में लिखा तो उसमें प्लीजिंग के साथ साथ में ट्रूथफुल भी है, और साथ में ये भी दूसरे के लिए जो हेल्पफुल हो. इफ वी आर लाइक हैविंग गुड इंटेंशन अबाउट समवन, अगर उसका वाकई में फायदा चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा प्लेजेंट ही हों. अगर आपका कोई टीममेट है, आपका कोई भाई है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, अगर कभी कभी बच्चों को थोड़ा टाइट करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा प्लेजेंट ही रहना है. उसके बेनिफिशियल के लिए अगर वो है तो दिस इज ओके. राइट, एग्री. Fantastic. Anyway, sir, guys, thank you very much. I think we should, we all are enlightened, Inderjeet. New insights have come in, and so nice of you to spare this time and share your learning with us. Thank you very much once again, Inderjeet. A full thumbs up to you for this excellent session.
And Thank friends, you. what we are going to do, we are going to share the PDF of this presentation. I'll seek permission from Inderjeet and share with you guys. We will also share the link of recording very soon in a 3-4 days time. Next session is going to be very interesting about entrepreneurship. I'm still chasing Mohit Vora, our alumnus of 98, who has created a great organization, created a great product to share his secrets about successful. He's yet to give me date because of some personal commitments, but either on 13th or 20th, we'll have this session. I'll update you. Diwali is coming. Season is there. All the best to all of you. Good wishes. Enjoy Diwali. Have prosperous, healthy year ahead. Thank you very much. So, thank you so much, Asim, for giving this opportunity to for this presentation today. And thanks to all of you. I am very pleased to meet all of you. बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सालों के बाद में बहुत सारे लोगों के साथ अब शायद मैं फर्स्ट टाइम ही मिल रहा हूँ. So it was a great opportunity, and thank you so much for time and pleasing words. Thank you. Hare Krishna. Happy Diwali, guys. Happy Diwali, everyone. Thank you so much.